Hello everyone. Today we are going to see in the jewelry making tutorial, we are going to see how we can design the ring. This is the second part of jewelry making with the help of the Paint 3D. Here we have 3D library and type ring. I'm selecting this FOC ring bearing 17 mm. Now go to the 3D shapes and take this hemisphere, draw here, go to the menu, go to the insert, take this, make sticker, magic select, then next, done. Now use it here, use like this, cover this ring, now I am going to use this color and make it small and take out from this ring. You can also use another color like white. You can also use black. I'm going to select the polished metal. You can also use like this. Then group it. So we have made a ring's front. It will look like this. It look like this.
Now we have a pearl, and we are going to click on the 3D library and click on this FOC ring bearing 17 mm again, and then click onto the sticker and wrap it with this. Again click onto the sticker and wrap it. Again click onto the sticker and again wrap this. Again click onto the sticker. Wrap this whole ring with this golden sticker. When we go to the higher version, then we will engrave the rings in Blender. Now we have a ring like this, and make it small, and we have a ring, we have a pearl, and we will place it here like this. We need to place it properly like this. And group it. See, if we want this pearl 3 times, so ungroup it and press Ctrl C, Ctrl V and place it here like this. So see, it will look good if I'm adding one more pearl. Like this. And group it. Select all and group it. See how beautiful it is looking. Now we are going to click onto the 3D library again and search for ring box. So we don't have ring box. Now we have a pearl and we are going to click on the 3D library
and click on this FOC ring bearing 17 mm again, and then click onto the sticker and wrap it with this. Again click onto the sticker and wrap it. Again click onto the sticker and again wrap this. Again click onto the sticker. Wrap this whole ring with this golden sticker. When we go to the higher version, then we will engrave the rings in Blender. Now we have a ring like this, and make it small, and we have a ring, we have a pearl, and we will place it here like this. We need to place it properly like this. And group it. See, if we want this pearl 3 times, so ungroup it and press Ctrl C, Ctrl V and place it here like this. So see, it will look good if I'm adding one more pearl. Like this. And group it. Select all and group it. See how beautiful it is looking. So I have already downloaded from the Google Velvet wallpaper and make that wallpaper sticker. So now I'm going to click on to the 3D library and write the ring in the search bar and press enter. So we have key ring, this we can select and then now select this key ring and
Now click onto the sticker. Now paste this sticker here like this, and like this, and again paste this sticker. Then again paste this sticker and commit. Now make the copies of this ring. Ctrl C, Ctrl V. First of all, we will group this. Select all and group this, and Ctrl V, and put it here. So this type of things we can show when we design a product, or we can also use this in a very high version. So put it here like this and see in 3D view. So it will look good. You can turn it like this and use this ring like this. Like this. Okay, now go to the sticker and add a sticker. Click onto the add sticker, and we have blue velvet. So click on it and magic select, next, done, and paste it here. Again use this like this, like commit. So you can use this sticker to make it in a proper way. We design this tray
Again click onto the sticker. Again take this and you need to use this sticker in every edges, nooks and the corner and the center in a very minute way. We have properly designed it. Select this and now from the back side we also need to cover it with the sticker. So we will use this again and then we will stretch it like this, okay, then right. So we have a tray of this ring and we will need to cover this it again. And set this ring like this. So we have set this ring. Now we have one pearl and
select this pearl, ungroup it, take it out this pearl, and then go to the Google and search for gold foil. Gold foil. So we have lots of gold foil here with different patterns. I'm going to take this, save images, save it, and you can also silver foil. So we have a silver foil background also. Again, save images and save it. Now go to the paint, remove this. Again go to the menu, click onto the insert, choose this golden foil and click onto the magic select, next, done. Again magic select, next, done, and then हमने पेस्ट कर दिया रिंग पे. So we have a very beautiful ring. You can make it big, and again you can take this sticker and like this, because the first time we use this golden foil, at that time then again go to the, so now we have this ring in a proper way. Make it big, then we have a ring in a proper way. Go to the Google and select some pattern like gold pattern. I'm taking this, save image as, save it, यहाँ पे हम डाल देते हैं कि हमें जेपैग की इमेज चाहिए होगी, नहीं तो हम क्या कर सकते हैं, एडोब इलस्ट्रेटर के थ्रू भी हम बना सकते हैं.
Now we have downloaded the gold based wallpaper that is in black color background, and we have downloaded the black color background with a gold pattern wallpaper. Then go to the insert and you need to click on this and again click onto the magic select, then next, then done. Now you can use this. So again next, again next, again done, again done. So cover this pearl, make it big, and then again go to the sticker and again go to the sticker and again use this. Again go to the sticker and again use this. And okay. Then again, paste it here and again paste it. So we have a pearl we have designed. Now delete this from here and we have this and हम इसको अब यहाँ पे यूज करेंगे. Take it out from this ring. So see how beautiful is this? इसको हम थोड़ा और निकाल लेते हैं कुछ इस तरीके से. तो हमारे पास एक ये रिंग हो गई. मम्मी बंद कर जाओ. Now group it. Group this
Now we have a ring pearl. Now we have a rings pearl. In a proper way and shift and select and control G. You can properly arrange this. You can properly arrange this and shift and group it. So this is a pearl we have also made. जैसे कोई ब्लैक कलर का लेके फिर उसके बाद गोल्ड फॉइल का यूज करके, तो वो कौन जो ज्वेलर्स होते हैं वो उसको ऐसे बनाते हैं। तो डिजाइन हम दे सकते हैं। डिजाइन हम कैसे बना सकते हैं? एडोब इलस्ट्रेटर में बना सकते हैं। फिर हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, हम यहाँ शो करें कि भाई हम इस तरीके से डिजाइन हमारे कुछ बन सकते हैं कि रिंग ऐसी भी हो सकती है। तो अब मैं फिर से 3D लाइब्रेरी में जाती हूँ और मैं यहाँ से एक रिंग ले लेती हूँ। अब मैं ये वाली रिंग ले लेती हूँ। और यहाँ पे हमारे पास एक बनी बनाई डायमंड रिंग का भी 3D है। तो या तो हम उसको यूज करके उस पे यूज करके देखें कैसे होता है, लेकिन हमारे पास हम अभी यहाँ से छल्ले पे बना रहे हैं, हम एक रिंग पे बना रहे हैं, तो हम वो कैसे लगेगा वो देखते हैं। तो इसके लिए मैंने अब मेन्यू पे जाके फिर से गोल्डन कलर ले लेती हूँ। तो हमारे पास है यहाँ पर स्टिकर में, तो मैं ये वाला ले लेती हूँ और इसको यहाँ पे पूरे में पेस्ट कर देती हूँ। फिर यहाँ पर यहाँ पर यूज कर सकते हैं हम। Then okay and okay. So we have used this ring and then we will use it like this and attach this like this. तो इस तरीके से हम ये वाली रिंग भी बना सकते हैं। इस रिंग के डिजाइन जो है बहुत ही ज्यादा सुंदर लग रहा है। अब हम कंट्रोल सी करके कंट्रोल वी और इसको हम अगेन इस तरीके से यूज कर सकते हैं और इस तरीके से और इस तरीके से। तो ये कुछ इस तरीके से बनेगा। तो ये भी बहुत ही ज्यादा सुंदर डिजाइन लग रहा है। कंट्रोल सी कंट्रोल वी और ये यहाँ पे हम इसको भी कुछ इस तरीके से कुछ इस तरीके से और कुछ इस तरीके। अब हम इसको ग्रुप करते हैं। So we have designed this in a proper way. Now अब हम क्या करेंगे, एक तो हमारा ये बन गया। अब हम 3D लाइब्रेरी में जाते हैं।
यहाँ से हम हैंड ले लेते हैं, हैंड, and take this hand, make it in a black color, and turn it. Now use a light wheel like this, and you can also place it in a proper way like this. Now we design सेव कर दिया रिंग पैटर्न के नाम से, ताकि हम इसको अगर एक्सटेंड करना चाहते हैं तो हम एक्सटेंड कर लेंगे। और हमने एक और रिंग लगा चुके हैं हम इसमें, वाइट कलर की मोटी वाली भी, कि हम इस तरीके से भी शो कर सकते हैं, या तो हम चाहें तो इसे इंडिविजुअली कर सकते हैं। लेकिन हमने इस वाले ट्यूटोरियल में क्या देखा कि हम किस तरीके से रिंग डिज़ाइन कर सकते हैं, तो ये आज हमने देख लिया। अब आप 2D शेप्स का भी यूज़ कर सकते हो, और 2D शेप्स को आप 3D में कन्वर्ट कर सकते हो। आप 2D डूडल्स का, आप 3D डूडल्स का यूज़ कर सकते हो 2D शेप में फिल करके। तो आपके पास अगर कोई डिज़ाइन है किसी तरीके का, तो आप गूगल पे डाउनलोड करके फिर डूडल्स का यूज़ करके उसको फिल करके उसको 3D बना सकते हो, एंड देन फिर आप यूज़ कर सकते हो। और आप खुद भी अपना वॉलपेपर डिज़ाइन कर सकते हो, जैसे कि आप एडोब इलस्ट्रेटर का यूज़ करके उसमें गोल्ड कलर का पैटर्न डाल के, तो कुछ इस तरीके से भी यूज़ कर सकते हो। अब हम इसको वीडियो में ये किस तरीके से दिखेगा ये हम बताते हैं वीडियो में सेव करके, कि फाइनल प्रेजेंटेशन वीडियो बनाते हैं तब प्रेजेंट कर सकते हैं किस तरीके से, तो ये बताते हैं अभी। नाउ अब हम इसे किस, हाउ वी कैन present this in the form of video. So go to the menu and save as and video, click onto the video, and swing is enough. So see, please stay safe and don't forget to subscribe the channel. Also press the bell icon for the latest updates. Thank you.